Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Key domestic indices witness gains. Sensex closes above 66,200 mark. Nifty settles above 19,700 level. Rupee closes at 83 rupees and 21 paise against the US dollar. And Brent crude hovers around $90.17 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक बढ़त में रहे। सेंसेक्स 66,200 के ऊपर और निफ्टी 19,700 के ऊपर हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 21 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर हुआ दर्ज और ब्रेंट कच्चा तेल $90.17 प्रति बैरल के करीब रहा। इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। A warm welcome, Avinash. गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और अब शेयर बाजार की खबर पर नजर डालते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 66,200 के ऊपर और निफ्टी 19,700 के ऊपर पहुंचे। दोनों सूचकांकों में ये बढ़त मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.58% की तेजी से 385 अंक बढ़कर 66,266 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.59% की तेजी से 116 अंक बढ़कर 19,727 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.8% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% की तेजी पर बंद हुआ। The key domestic share indices witnessed gains of more than 0.5% today. The BSE Sensex closed above the 66,200 mark while the NSE Nifty finished above the 19,700 level. Both the indices rose amid mixed global cues. The Sensex gained 385 points or 0.58% to end at 66,266. The NSE Nifty also rose 116 points or 0.59% to settle at 19,727. In the broader market of the BSE, the mid-cap index accelerated 0.8% and the small-cap index rose 0.4%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 companies appreciated while those of 10 declined. Larsen & Toubro rose 4.3%, IndusInd Bank gained 2.3%, and Tech Mahindra advanced 1.7%. On the other hand, Sun Pharmaceutical Industries declined 0.9%. Mahindra & Mahindra and Infosys both slumped 0.75% each. Hindustan Unilever and Ultratech Cement both fell 0.6% each. In sectoral indices at the BSE, all the sectors witnessed gains except the FMCG, which declined 0.4%. Capital goods surged 2.3%, industrials appreciated 1.55%, and realty sector accelerated 1.45%. The overall market breadth was positive as shares of 2,240 companies appreciated and 1,439 companies declined. A total of 128 shares remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 21 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 104.99 पर था। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो सितंबर का महीना है उसमें एक हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। अभी तक लगातार आज 5वां सत्र है जब बढ़त हुई है भारतीय बाजार में। इसके पीछे आप
क्या कारण मानते हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब बाकी जो एशियन बाजार है और यूएस का जो बाजार है वहां पर हमने मंदी देखी है? देखिए, मुझे लग रहा है कि 4-5 दिनों से जो तेजी देख रहे हैं वो ज्यादातर थोड़ी बहुत डिलीवरी बेस्ड बाइंग हमको बहुत लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप में देखने को मिली है। तो ये जो बाइंग का जो सिलसिला है मेरे ख्याल से ज्यादातर HNIs, PMSs और इंस्टीट्यूशन से आया है। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में थोड़ा बहुत वैल्यू बाइंग आ गई है और ब्रॉडर मार्केट में आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें तो कोई बड़ा अपसाइड आने की उम्मीद नहीं है। Avinash, interestingly, today the mid and small cap stocks managed to retain investors' interest, even though their valuations are relatively high, and I would like to have a comment from you. But what about the persistently weak trade data from China, which continues to cast a shadow over the global markets outlook? How has that, along with the crude oil prices, injected some positivity into the market? No, I think as far as the broader market is concerned, small caps have shown significant rise in the last few months, and I think to some extent some profit booking could be coming in. Because I also would agree that the markets have actually given a big thumping kind of upgrade to the small and mid cap sector, but I think the move has been very fast. So obviously some amount of profit taking and some amount of profit selling could be visible selectively on some stocks. But I think the broader market is still looking at promising sectors like automobiles, auto components, capital goods, real estate. Typically, even some sort of action is happening in the specialty chemical segment. Sugar is one sector where there's a lot of interest. I would believe that, I think selectively there are going to be many smaller companies which are going to be targeted by investors here. So it may not be a broad-based panic sell-off, but yes, some selective, profit booking could be visible. And I think as far as the global data points are concerned, I think we have been always telling our investors that be focused on the domestic sector because globally, the headwinds continue to be challenging. China still continues to struggle. We have seen a lot of negativity coming in from US and Europe. And I think to that extent, export-oriented sectors like IT or for that reason, pharma, typically, certain, companies which export large part of their production, there would be some challenges in the coming 2 to 3 quarters because the rupee is also getting weak. If it gets weaker, then that makes imports more costlier. And obviously, for a country like India, we are a net importing country. So that would obviously upset the trade balance also. So I think, we are focused more on the domestic sector. And I think that would be a better strategy in this kind of volatile market. So अविनाश जी, अभी जो ये G20 का सम्मेलन होने वाला है, G20 को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। जो भारत का एक पोजीशन है एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो भी बरकरार रही है। अभी जो लेटेस्ट GDP फिगर्स आए हैं, इस पूरे सिनेरियो का मार्केट के सेंटिमेंट पर क्या असर पड़ता है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बढ़ावा मिलता है? देखिए, पहली बात तो ये G20 का समिट जो होने वाला है वहां पे यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन साहब आने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर है। मार्केट्स इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगी क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा G20 में। और डेफिनेटली ये जो G20 का समिट होगा उसमें जो चाइना रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में API की जो कंपनियां है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, वहां पे हो सकता है कि इंडिया को जो चाइना से ट्रेड आता है उसका शेयर इंडिया को ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज इंडिया में जो है वहां पे मुझे लगता है कि काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। प्लस डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, उसके बाद ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन ऐसे सेक्टर्स है जहां पे काफी टेक्नोलॉजी चेंज और एक्सचेंज भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे सेक्टर्स इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए क्योंकि G20 के समिट के बाद आपको काफी ऐसे न्यूज फ्लोज इन सेक्टर्स के बारे में ऐसे अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और आपने चाइना की बात करी, वहां से वीक ट्रेड डेटा लगातार आ रहा है। इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है उसका जो असर है वो भारतीय बाजार पर कितना पड़ सकता है? और वहां जो रियल्टी, स्पेसिफिकली जो रियल्टी क्षेत्र में जो संकट उभरा है, क्या उसका स्पिल ओवर वर्ल्ड पर भी हो सकता है? हमारे रियल्टी सेक्टर कितना आपको मजबूत दिखाई देता है? देखिए, हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ज्यादातर एक डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर है। चाइना का रियल एस्टेट मार्केट अगर थोड़ा बहुत फिजल आउट होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है
तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा नहीं। मुझे लग रहा है कि इंडिया एक डोमेस्टिक फोकस्ड इकोनॉमी है और रियल एस्टेट ज्यादातर डोमेस्टिक फोकस्ड ही प्लेयर्स यहाँ पे है, जहाँ पे बड़ी मात्रा में एक्सपेंशन और बड़ी मात्रा में ग्रोथ दिख रहा है। तो इंडिया की इकोनॉमी में अगर 6.5-7% का जीडीपी ग्रोथ आता है, होपफुली अगर कॉर्पोरेट कैपेक्स जिस पेस से चल रहा है वो और तेजी से बढ़ता है, हाउसिंग एक ऐसा डिमांड है जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। तो चाइना रिलेटेड जो भी रियल एस्टेट की बात आपने कही, मुझे नहीं लगता है उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स के ऊपर आएगा, वो उनका इंटरनल मैटर है। अविनाश जी, आपकी आवाज कट रही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज कर सकें। मैं कह रहा था कि रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट, चाइना रियल एस्टेट का इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक रियल एस्टेट मार्केट पे बहुत कम रहेगा, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं जी। So, Avinash, since we are on China, let me ask you a question about the 19 trillion Chinese economy, which is decelerating fast. There are some fundamental issues which is dragging the Chinese growth down. China's population has peaked and has started declining. An economy with a declining population cannot sustain long-term growth above 3%. And this is a lesson from economic history concerning China. So apart from that demographic shift, the Chinese economy is also suffering, which you just touched upon in the form of real estate sector. Housing has started to decline. There is unemployment. Consumption is stuck at 40% of GDP. So going forward, what will be the state of China? How will they come out of it? And what repercussions will that have on the Indian economy? Though you have mentioned that we will not be touched much because of the real estate scenario in China. I think, first of all, you've rightly pointed out that the Chinese economy is going through a major kind of a problem. There is a problem of demand problems in sectors like housing, employment. Plus, there are many sectors where, I think demand has actually contracted significantly, especially after COVID. Most of the companies abroad have started sourcing from other countries like India and the other Asian countries. So I think, the problem with Chinese economy is that it may take at least 2 to 3 quarters before normalcy comes back again. Now, how much impact will China have on India is a very difficult thing to quantify, but I could only tell one thing, that as far as the global metal market is concerned, the commodity, pharmaceutical input, that is API market is concerned, there could be a significant deceleration there, and that benefit of some sort of oversupply there, weak demand, could actually translate into some sort of positivity for Indian companies here. Of course, to quantify how much it would be, it would take some more time, but I think broadly it's better to be away from the metal pact, because whenever China has a problem with metals, the entire global economy suffers, and that means that companies which are in the metal space in India could also see their profit margins quite sharply. Okay, Avinash, coming back to the Indian economy, do you think sectoral rotation will take place, because the stocks or the sectors which have gone one way will consolidate or come down depending on the quality of the company? But at the same time, and this is the moot question that I have from you, is the stocks which will come up because of liquidity. The liquidity for the market is adequate, do you think, because of domestic money is coming, and also FIIs haven't actually loosed their purse strings very much. So that money is also waiting in the wings. Yeah, definitely. I think, you must understand one thing, that the market is now entering a very volatile zone. We'll be looking at, elections now in 2 states, that is Madhya Pradesh and Rajasthan, in November and December. In fact, there have been some reports in the market that possibly general elections could come in as early as February 24. So I think, whenever the election schedule is announced, I think you will see markets, obviously reacting to these developments, and markets don't like elections and uncertainty. As far as the sectoral rotation is concerned, you're right. Sectors which have gone up significantly are bound to see some consolidation. Some profit booking will come in, and you will probably see some new sectors coming in. Like recently we have seen that now the sugar sector, the ethanol sector, the paper sector, these are again sectors which are coming in limelight. So I think I won't see this sector churn happening at least every 2 to 3 months. And I think the markets are obviously aware that any announcement on the election schedule
will obviously make the markets more volatile. As far as FI liquidity is concerned, we have seen for the last few weeks, FI flows have also reduced significantly. Domestic selling has increased. So I think at higher levels the market seems to be exhausted. But yes, I think probably broader market, the smaller companies where earnings numbers have been good, the business commentary has been good. I think there you could see some selective buying. But I think it's going to be only action in the broader market. On the index side, as I mentioned in the beginning of the call, the markets are going in a very close kind of way. सो आप जो कह रहे हैं कि FIIs का जब ये करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो हमने देखा कि FIIs का फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था. अभी जो हम थोड़ा उसमें एक एबिंग देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं, उसके कारण क्या हैं और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको लगते हैं FII फ्लोज के, और अभी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल, उनका क्या रुख है बाजार के प्रति? मुझे लग रहा है कि अप्रैल से मार्केट जो भागा था प्योरली लिक्विडिटी ज्यादा आने के कारण, वो अभी मार्केट ऐसे लेवल पे पहुंचा है जहां पे मार्केट अभी अगला ट्रिगर का इंतजार कर रहा है. और वो ट्रिगर बेसिकली कोई मैक्रो या कोई इंटरनेशनल इवेंट से आ सकता है, क्योंकि अर्निंग सीजन पहले तिमाही के तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं. अभी मार्केट इंतजार कर रहा है कि बारिश का परफॉर्मेंस कैसे होगा, इन्फ्लेशन कितना नीचे आएगा, और उसके बाद ऑब्वियसली ग्लोबली किस प्रकार से इन्फ्लेशन के ऊपर आंकड़े आएंगे. अगले हफ्ते मुझे लग रहा है FOMC की भी मीट है, वहां पे पॉवेल साहब इंटरेस्ट रेट्स पे क्या कमेंट करेंगे, वहां पे 25 पॉइंट इंक्रीज होगा नहीं होगा, ये सारी बातें मार्केट्स को नियर टर्म में ड्राइव करेगी. रही बात FIIs की लिक्विडिटी की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए उन्होंने भी काफी पैसा बनाया, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, और हो सकता है कि इलेक्शंस का शेड्यूल के लिए वो भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि शायद जनरल इलेक्शंस मई जून में होने वाले थे, वो अभी शायद फरवरी में होंगे. तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा कॉशियसली इस इवेंट को देखेगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कंसोलिडेट करेगा. अपॉर्चुनिटीज आपको छोटी मझोली कंपनीज में ही मिलेंगी, और वो भी मेरे ख्याल से सिलेक्टिव कंपनीज, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत से अभी काफी बढ़ चुकी है. तो अभी काफी लोग बात कर रहे हैं कि शायद जो नया माइलस्टोन है, अगर हम निफ्टी की बात करें 20,000 नियर टर्म में पहुंच सकता है. आपको लगता है कि ये सारे वॉलेटाइल फैक्टर्स को देखते हुए शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा? देखिए, अगर 20,000 आता भी है तो मेरे ख्याल से हम बहुत दूर नहीं है, 200-300 पॉइंट की बात है, लेकिन वहां जाने के बाद वो कितना सस्टेन होता है और कितना इंक्रीमेंटल अपसाइड आता है वो मार्केट देखना चाहेगा. मेरे ख्याल से 20,000 तो सिर्फ एक नंबर है, अभी हम 19,700 है, सो 200-300 पॉइंट की बात तो बहुत मामूली है. उसके बाद कितना इंक्रीमेंटल अपसाइड ये सस्टेन होता है वो देखने वाली बात है. तो आई थिंक 20,000 का कोई बड़ा नंबर ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर कोई बड़े मात्रा में FIIs वापस निवेश करते हैं या इन्फ्लेशन नीचे आता है, बारिश अच्छी होती है, तो फिर उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. लेकिन सेकंड हाफ में इलेक्शंस का दौर आने वाला है, ये मार्केट भी थोड़ा सा फैक्टर इन कर रहे हैं. So Avinash, we're talking about 20,000 and there's a chance, hopefully, of touching 21,000 or 22,000. But for that to happen within a week, large caps will need to participate as well. And large market sentiment is uptrending in any case. No, that's what I'm saying. We have reached at the higher end of the market, and that's why the broader market will remain in a very close range. For the Nifty to go to 20 or 21,000, you need the large caps to participate in a big way, which we feel may not happen because already prices have shot up quite significantly. और ब्रॉडली अगर हम बात करें अभी का जो सिनेरियो है जिसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं, आप कह रहे हैं कि इतने सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं और वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, ऐसे में आपकी ब्रॉड एडवाइस क्या होगी इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, हमारा मानना है कि देखिए बाजार में करंटली कोई जल्दबाजी ना करे. मुझे लग रहा है कि बाजार जिस लेवल पे है, अभी हो सकता है कि आपको शायद एक मॉडरेट करेक्शन भी देखने को मिले, क्योंकि जिस प्रकार से अभी FIIs के आंकड़े आ रहे हैं, पिछले 8-10 दिनों से नेगेटिव नंबर आ रहा है, डोमेस्टिक फंड्स भी ज्यादा खरीद नहीं रहे हैं. मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखने को मिले, लेकिन जो छोटे मझोली कंपनीज है अगर वो नीचे आती है मिड कैप स्मॉल कैप्स में, तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी कंपनीज में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स को तैयार होना चाहिए. क्योंकि लार्ज कैप में हमने अप्रैल से अभी तक जो अप्रिसिएशन आया है, वहां से अभी अगला मूव और अगला ट्रिगर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा. तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली आप मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद ही खरीदने के मौके मिलेंगे. अभी करंटली हम इन्वेस्टर्स को यही कहेंगे कि थोड़ा सा कॉशियस रहे. Okay, what do you think about the IT sector? And it seems that the street is quite divided on it. One part says that it is reasonably priced, the other says it is not. So what are your views on it, given that a lot of macro headwinds are coming its way? Do you think it has played out and it's time to look at it positively?
See, I think our sense is that most of the IT companies have discounted the worst. For a very meaningful upside, we have to wait. I believe second quarter also is going to be a challenging quarter for most of the IT companies. I think if one wants to make a small allocation to IT, one can definitely look at the larger cap companies. But I think the time horizon has to be pretty large because they yet find that there are some significant events in Europe and US. So probably from the third quarter of this financial year, we could see a smart uptick in IT. Hopefully, if the problems related to US like inflation, demand compression actually get sorted out. और इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चलें, आपका एक कमेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लेटेस्ट आ रहे हैं, पीएमआई जो सर्विसेज पीएमआई है वो हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है अगस्त में, लेकिन अभी भी 60 से ऊपर है। आपको लगता है कि जो इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अभी भी स्ट्रांग बने हुए हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगा कि अविनाश जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लें। जी, या अभी आवाज आ रही है? जी। हाँ, तो कह रहा था, देखिए सर्विसेज पीएमआई बढ़ चुका है, लेकिन हमारा मानना है कि इंडिया में जो कंजम्पशन का जो मार्केट है और जिस प्रकार से अभी स्पेंडिंग पैटर्न दिख रही है, प्लस अगर इस बार रूरल इंडिया में मानसून का पॉजिटिव इफेक्ट है, तो मेरे ख्याल से इसमें बड़ी कोई दिक्कत उम्मीद नहीं है। हमारा मानना है कि सेकंड हाफ में होपफुली एफएमसीजी कंपनियां हैं, रूरल ओरिएंटेड कंपनी जो है, वहां पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्योरली ये डेटा पॉइंट देख के ये अंदाज लगाना कि कोई चिंता की बात है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से हमको 1-2 महीने का डेटा और वेट करना चाहिए, उसके बाद एक क्लियर ट्रेंड विजिबल होगा। Avinash, what do you think about this higher for longer interest rates theory that's going on, because the world stocks have slid for the third straight day, and there's choppiness in Europe, and there is inflationary pressures in the US, and there is rising energy prices. Because of that, there is a slogan going on, higher for longer interest rates. Yeah, I think interest rates are unlikely to come down in a hurry. See, basically, even in the US, Mr. Jeff Powell, who is the Fed governor, he has already clearly indicated that the headline inflation needs to come down to 2%. So I think US is going to face a challenge at least for the next couple of quarters. Interest rates may continue to go up, and till inflation doesn't come down, we may say continued rise in interest rates. So I think US is definitely going to be bogged down by inflation. I think India is a different setup. We have a large domestic economy. Of course, if the crude prices go beyond $90-95 a barrel, then that could create a little problem for us also. But I think we need to monitor this for at least a couple of few months before we anticipate that the trend is getting overly negative for us also. आइए अब चलते हैं एशियाई बाजारों की ओर। अधिकांश एशियाई शेयर बाजार आज नुकसान पर बंद हुए, सिवाय सिंगापुर के, जहां स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% की बढ़त पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 1.4% के नुकसान में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.15% गिरकर बंद हुआ। जापान के निक्केई सूचकांक में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.6% के नुकसान में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में रुख मिला जुला था। लंदन का फुटसी 0.15% और फ्रांस का कैक 0.13% की बढ़त में रहे, लेकिन जर्मनी के डैक्स में 0.17% की गिरावट चल रही थी। आपको लगता है कि चीन का हमने अभी जो डिस्कस किया, वहाँ जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से अन्य एशियाई बाजार जो है उस रीजन के, उनमें दबाव बना रहेगा? बिल्कुल दबाव बना सकता है। ट्रेड पैटर्न है वो ज्यादातर एशियन कंट्रीज और यूएस के जो रिलेटेड और यूएस कंट्रीज है वहां पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर वहां पे कोई स्लो डाउन आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, डिमांड कॉम्प्रेशन आता है, तो जो कंपनीज या कंट्रीज चाइना को ज्यादातर एक्सपोर्ट करती है वहां पे दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी। लकीली हमारा ट्रेड चाइना के साथ बहुत लिमिटेड है, इंपोर्ट्स हमारे काफी सिग्निफिकेंट और ज्यादा है। तो डेफिनेटली जो कंपनीज इंपोर्ट करती है इंडिया से, उनके लिए शायद थोड़ी दिक्कत की बात रहेगी, क्योंकि वहां से अगर रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं आता तो इनको उनकी लॉजिस्टिक्स और उनको सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उनको काफी बदलनी पड़ेगी। Moving on, the Wall Street's three major indices closed lower yesterday, with the Nasdaq's 1% loss leading the declines after strong service sector fueled concerns that ongoing inflation could last for longer. The Nasdaq Composite Index fell 1.06%, the S&P 500 declined 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average slipped 0.6%. Very quickly, Avinash, what is in
immediate contrast to what is happening in India. The small and mid-size companies are ruling the roost. There is opposite happening in US. A handful of technology mega caps surging on the boom in artificial intelligence, leaving small caps in the dust. So what is the future there? अविनाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, अभी सुन पा रहा हूँ. Can हाँ you जी. please repeat the question? No, the trend in US is exactly opposite to what is happening in India. They are driving on the mega caps which are surging on the boom in artificial intelligence, and there is very little room for small caps, and that is why the market is going to the dust when it comes to small caps in the US. So how do you draw the parallel between India and US? See, in India, the main market is the large cap stocks. I mean, they don't have a very broader small and mid, stock category. In India, the broader market is very important because we have seen a lot of smaller companies hitting the capital market, both on the primary market side and secondary market side. I think in US, one cannot have a direct comparison to what is happening in India, specifically the mid-cap category stocks are concerned. One thing is very clear. There has been a very high level of speculation in the small and the mid-cap category of stocks, which I believe on the verge of some sort of a major correction. So here also has to be very careful. One needs to be very selective here. Okay. Moving on, the oil prices eased today as an uncertain economic outlook for China outweighed expectations of tighter supplies from extended supply cuts in Saudi Arabia and Russia. In intraday trade, Brent crude was trading at $90.17 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $87.06 per barrel when reports last came in. Avinash, how worrisome is the tighter supplies from extended production cuts in Saudi Arabia and Russia, and how is it going to affect the oil prices? I think India benefited from a cheaper crude from Russia, but now even Russia has said that discounts on oil will not be given. So my sense is if oil continues to go in above $90 to $95 a barrel, then that is definitely going to have a significant negative impact on inflation. It will obviously make the trade deficit more weaker. So I think we'll have to wait for a couple of months before we can get a fair assessment. But I think signals clearly are there that the supply constraint in the oil market is going to result in higher degree of oil price. And बहुत ही briefly, चाइना में जो आउटलुक नेगेटिव है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहें? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है, जैसे सऊदी ने प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में काटा है क्योंकि उनको ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड थे. तो मेरे ख्याल से सारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अगर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स कंटिन्यू करते हैं तो डिमांड तो वैसे भी है 4-5%, लेकिन सप्लाई अगर कम होता है तो ऑयल के प्राइसेस में जो अभी तेजी दिख रही है वो शायद थोड़े दिनों के लिए और चलेगी. उसके बाद जब ओपेक वापस मिलेगा और प्रोडक्शन और सप्लाई की बातें होगी, तभी मेरे ख्याल से ऑयल में कोई कटौती आएगी. और चलते चलते बता दें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना मामूली बढ़त के साथ 59,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 385 रुपए की गिरावट से 72,087 रुपए प्रति किलो पर थी. Thank you, Avinash, for being with us and throwing light on market and other issues related to the economy. Thank you for being with us. And before we close, the headlines once again. Key domestic indices witnessed gains. Sensex closes above 66,200 mark. Nifty settles above 19,700 level. Rupee closes at 83 rupees and 21 paise against the US dollar, and Brent crude hovers around $90.17 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.